Now, the National Board of Examination has released finally the date of NEET PG 2025. There are many inner voices which start to come. जैसे ही हमें पता चला कि just 90 days बचे हैं, we need to focus on one single target. इसी point of time, working on our dream seat in our dream college. That's it. Now, this has to be the strategy for all your subjects. Hello, dear medical students. I hope you guys are doing fine. Now, the National Board of Examination has released finally the date of NEET PG 2025. And the exam is going to be conducted on 15th of June. Now, the exam is going to be conducted on a computerized based platform as well as it will be conducted in 2 shifts. अब जैसे ही हम ये खबर सुनते हैं, the moment we hear this, every student has got anxiousness building inside. There's a lot of anxiety and that's pretty normal for any student point of view. Now, there are many inner voices which start to come. जैसे ही हमें पता चला कि just 90 days बचे हैं, तो पहली इनर वॉइस क्या कहती है कि सिर्फ 90 डेज 19 सब्जेक्ट्स, इज इट इवन पॉसिबल? एक इनर वॉइस कहेगी चलो छोड़ो, अगले साल देखते हैं, 2026 में देखा जाएगा. एक इनर वॉइस कहेगी आई एम ऑलरेडी वर्किंग, आई एम ऑलरेडी एन इंटर्न राइट नाउ, और लेट्स से आई हैव गॉट सम जॉब टू डू. इसके साथ विल आई बी एबल टू इवन फोकस ऑन माई स्टडीज इतने शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम पे? एक अंदर से वॉइस आएगी जिसमें पैल्पिटेशंस होंगे, जो कहेगा कि अगर मैंने खत्म भी कर लिया, whether I'll be able to revise or whether I'll be able to do ample enough of questions कि मैं इस पर्टिकुलर एग्जाम को क्रैक डाउन कर दूं. और इन सारी वॉइसेस में एक ही चीज कॉमन होगी कि ये आपको एग्जाम और आपकी ड्रीम से दूर ले जाएंगे. They will keep you away from it. तो आपका फोकस चला जाएगा. And this is what we need to channelize our energies on. We need to focus on one single target. इसी point of time पे. And we have to shut down these inner voices and ask ourselves, why are we becoming doctors? Why are we putting so much of efforts in these 5 years of profession, जिसमें आप every day एक ही चीज एक ही बार करना चाहते हो? And that is what serving people. तो हमारा फोकस होना चाहिए सिर्फ एक चीज पे, working on our dream seat in our dream college. That's it. और कुछ भी एक्स्ट्रा अगर दिमाग में आए, उसे शट करके बंद करके साइड में रख देना है. अब हम इसे कैसे करेंगे? दिस इज व्हाट वी नीड टू स्ट्रैटेजाइज आवरसेल्फ. एक अच्छी स्ट्रैटेजी से हम कुछ भी ओवरकम कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले इस डर को हटाना हो. एक बड़ी फेमस सेइंग है एंड दैट इज फ्रॉम विल स्मिथ, अ वेरी फेमस एक्टर, एंड ही टोल्ड दैट द बेस्ट पार्ट ऑफ आवर लाइफ लाइज ऑन द अदर साइड ऑफ आवर फियर. हम जो भी कुछ सोचते हैं, हमारे अगर कंफर्ट जोन के बाहर निकल के हम जाते हैं, it gives us a lot of fear. But at the same time, it is the best part of our life that we're going to live. I'm going to ask you to do the same thing in the last 3 months. Don't take them as 3 months. Take them as 90 days. And 90 days is enough. If you see 90 days, बहुत दिन होते हैं. It's not a short span of time. Now here, I need you to challenge your own comfort zones. अगर हम 2 घंटा पढ़ते थे, हम ज्यादा पढ़ेंगे, हम 9 से 10 घंटे रोज पढ़ेंगे. At least. Because हमारी ड्रीम छोटी नहीं है. So we have to work very hard. We have to strategize ourselves in order to work ample and get results. And at the same time, we have to practice a lot. इसी right strategy से हम NEET PG crack down करेंगे और करके ही रहेंगे. That has to be our thinking. Okay? Now, कैसे करें? How to make a plan? In the beginning, we should have a timetable. कोई भी चीज करने के पहले आई वॉन्ट यू ऑल टू राइट डाउन अ पीस ऑफ पेपर, राइट डाउन अ टाइम टेबल. आप कितने घंटे पढ़ोगे, क्या रिवाइज करोगे, कितने क्वेश्चन करोगे, एंड स्टिक इट ओवर ऑन द बॉल. जिसको आप एवरी डे देखेंगे, एवरी डे एनालाइज करेंगे और अपने आप को पूछेंगे कि वेयर यू आर एग्जैक्टली और वेदर यू आर एक्चुअली मैचिंग अप द टाइम टेबल और नॉट. इफ यू आर नॉट, यू नीड टू पुट इन मोर एफर्ट्स. राइट? Divide all the 19 subjects into 3 segments. High priority subjects, medium priority subjects and low priority subjects. अब ये हमने कैसे किया? I'm going to tell you a very simple logic. This is how I used to read. High priority subjects वो है which in all exams have popped in around 30 to 40 questions. वो आएंगे ही आएंगे. And that is medicine, surgery, obs and gynae as well as community medicine. These 4 subjects have to be the highest priority. That means they demand the maximum time. Then comes your medium priority subjects, which are your basic science subjects. All basic science subjects. Anatomy, physiology, pharmac, microbiology, biochemistry, pathology. All of these subjects carry an ample amount of moderate weightage.
And these particular subjects, they kind of have got a coverage with the clinical side also. Because if you read anatomy, you can be asked a surgical anatomy question. Or let's say you're reading physiology, you can be asked about some kind of a case which is related to medicine. Pharma is related to a drug that can be clinically applied into medicine. So all of these subjects, if you read, half of the job is done for surgery as well as medicine. And that is why I call this particular type of learning as mix and merge learning. आप एक फार्मा को अलग सब्जेक्ट मत देखें that I've got pharma to finish, I've got physio to finish. If you are finishing physio, pharma and pathology, you're already halfway done in medicine. Because you have already done the drugs, you have already understood about the pathologies, you have already understood about the physiology of the system. There are very few aspects you need to learn extra beyond that. So this is what is called as mix and merge learning. You need to do that here. And finally comes the low priority subjects, जिसमें आपके सारे allied subjects आ जाते हैं. That is ENT, ophthalmology, forensic medicine, dermatology, psychiatry, orthopedics, radiology, anesthesia. And in all of these subjects, there has to be a low weightage, which usually comes in NEET PG as far as NEET PG is concerned. इन सारे subjects में कम questions आएंगे, but at the same time, हमारी यहीं पे strategy बिगड़ जाती है. We all think that give maximum time to major and moderate subjects. Don't give much of time. इनको देखा तो देखा, नहीं देखा तो नहीं देखा. That is absolutely wrong. Always understand the less weighted subjects are the game changers and the rank changers. If you don't treat them well, they are going to change the rank drastically. Because everybody reads the majors, everybody reads the moderate weighted subjects. The minors are the ones which are going to carry a huge advantage if you read them. And इसमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है. You just need to know what are the high yield topics. High yield topics, you just do the MCQs over them as well as the PYQs, you are sorted. Okay? So you have got a timetable. You have divided these 3 category subjects and you have kept it. जिसमें सबसे ज़्यादा time आपको highest पे देना है और कम time आपको lower weightage पे देना है. Yet आपको high yield पढ़ना है. Now let's come to the second point of strategy. At this particular stage, there is no point of reading the whole subject word by word, line by line and doing a PhD. वो time नहीं है. So how are we going to actually do that? सबसे पहले, whenever you are reading a subject, take out a copy and note down what are the high yield topics of that subject which have been asked again and again. जैसे suppose I'm talking about my own subject ENT. So there are around 10 to 15 topics जो हर साल पूछे जाते हैं. There are questions. They are going to ask again and again, those topics, maybe the question changes, but the topic is going to be the same. तो आपको 10 से 15 topic ही पढ़ने हैं. That are the high yield ones, right? So write down the high yield topics पहले. Now finish those high yield topics and the MCQs which are present with each of that topic. Instead of going word by word, MCQ based reading start करो. आपने एक MCQ पढ़ा, उसमें एक particular case दिया हुआ है. Let's say I'm taking my own subject here. Let's say you're reading about otosclerosis. तो otosclerosis का आपने एक क्वेश्चन पढ़ा, उसके you read about 4 options. Now when you read about those 4 options, आपने एक चीज समझ ली कि ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर ये है. बट उसके अराउंड otosclerosis की 10 चीजें आप और पढ़ो कि otosclerosis की जो 10 क्वेश्चन और आए हैं, जैसे कि इसमें Carhart's notch दिखती है और लेट्स से otosclerosis में सोडियम फ्लोराइड ड्रग देते हैं, स्टेपिडोटमी करते हैं, तो आपने 10 मिनट में 10 चीजें otosclerosis की सीख ली. So what is going to happen? You have done 10 high yield points of otosclerosis in just 10 minutes. Which is a chapter which can take the whole day, अगर आप उसमें बैठे रहे तो. But 10 मिनट में आपने 10 चीजें पढ़ ली. Now this has to be the strategy for all your subjects. You have to keep doing MCQ based reading. Right? And you have to finish off all the MCQs. Now here also comes a very important point of what is the importance of the previous year questions. Every year in NEET PG, maybe directly or indirectly, 15 to 20% of weightage is given to the previous year questions. That is why in every chapter that you are doing, make sure you do all the previous year questions that have been asked. Maybe that question can come as it is, or it can get turned in some form and it can present in a new way, but it's going to have the same meaning. Okay? That is your second thing. Do PYQs and do MCQs and do an MCQ based reading. अब आती है तीसरी स्ट्रैटेजी. तीसरी स्ट्रैटेजी होती है कि हम टेस्ट कब देंगे. What is grand test और हम grand test देना important है कि नहीं है? I will say grand test is the most important. Now whenever we give grand test, हमारे पास 3 ऑप्शन आते हैं. And that is what? एक टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं जो कभी हमने सुने ही नहीं होते. That is unheard questions. New questions. जो कहीं नहीं है किसी किताब में. It has not been asked since time. ये questions को हमें लिख के रखना है. We have to write down all these questions and we have to see कि ये questions next test में repeat अगर होंगे तो we will answer it right. These are the unheard part. Then comes those particular questions जिसमें हम जानते हैं पर we are making silly mistakes. हम जल्दी जल्दी में गलत कर रहे हैं. Now those जल्दी जल्दी वाला गलत
happens because of lack of revisions. That means those topics have to be revised more. And then comes third category of, questions where you know the stuff, but you still cannot analyze it. So what is that? That has got to do with content. यानी आपको अपना content बढ़ाना पड़ेगा, आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी in making an understanding about that chapter more, ताकि आप उसे अच्छे से analyze कर पाएं. So these are the three categories which will happen in a grand test and which will show you कि आप यहाँ पे lag करते हैं. And that is why grand tests give you a real good boost about how to challenge them and how to ace them. Up the moment you finish the grand test in the evening, take a 2 to 3 hour break, go back, sip a coffee, and then sit down and see what all questions you have done wrong. आप अपने राइट्स पे फोकस मत करिए, आप सिर्फ अपने रॉन्ग्स पे और कंफ्यूज्ड क्वेश्चंस पे फोकस करिए और उसको अपने आप कॉपी में लिख लीजिए कि ठीक है ईएनटी से लेट्स से 10 क्वेश्चन आए थे, इसमें आई न्यू 6 ऑफ देम, 4 नहीं आते थे, 4 मैंने इनके आंसर लिख लिया, आई अंडरस्टूड अबाउट द होल लॉजिक. मेडिसिन में ये आया था, आई न्यू अबाउट दिस कार्डियक फेलियर वाला, बट ये मुझे समझ में नहीं आया, लेट्स से मैंने इसको लिख के रख लिया एंड नेक्स्ट में आई एम रेडी. सो दिस इज हाउ यू हैव टू चैलेंज एंड एस योर ग्रैंड टेस्ट एंड ये स्कोर आपका बढ़ता चला जाएगा. अगर स्कोर नहीं आ पा रहा है उसमें एंग्शियसनेस नहीं होनी है. इट इज जस्ट टू शो यू कि आपको थोड़ी सी ज्यादा एफर्ट डालनी है, थोड़ी सी ज्यादा मेहनत करनी है. दैट्स ऑल. ओके, तो वी हैव स्ट्रैटेजाइज्ड आवर लर्निंग ऑन द टाइम टेबल बेस. हमने एमसीक्यूज करे, हमने पीवाईक्यूज किए, हमने बहुत सारे ग्रैंड टेस्ट दिए, एटलीस्ट एक दिया पर वीक. ओके, व्हाट मोर? इसके साथ वी हैव टू स्टे डिसिप्लिन्ड विद आवर टाइम टेबल. सबसे इंपॉर्टेंट चीज, doctors are the most disciplined creatures. I don't say that a doctor is an intelligent person. A doctor is a diligent person. हम जितना ज्यादा disciplined और diligent रहेंगे, no matter how much I feel bored about things, no matter how much I feel, not doing that, that is the point of time I have to challenge myself to sit there and do it again. और ये बहुत दिन आएंगे where I won't feel like मैं छोड़ देना चाहता हूं, मुझे नहीं करना, let it go. That is the point of time you have to ask yourself, what are you doing this for? You're doing it for your own dream. You're doing it to serve others. You're doing it to become a future physician or a future surgeon. And that is what is going to, come in your way as a roadblock. और यहीं पे हमें बैठ के उस ब्लॉक पे उसको चैलेंज करके उसको खत्म करना है. Okay? So, you have to stay disciplined. At the same time, you have to eat right and sleep right. आपको खाना भी अच्छा खाना है, हेल्दी खाना है. यू कांट मंच चिप्स इन द नाइट 12 o'clock इन द नाइट एंड देन यू कैन मंच अ बर्गर एट 3 o'clock इन द नाइट एंड देन उसके बाद आपको 7 बजे सुबह उठना है. आपकी राइट फ्यूल और एनर्जी के लिए राइट फूड भी इंपॉर्टेंट है. यू हैव टू ईट लाइट एंड कीप ईटिंग इन ब्रेक्स. 2 to 3 घंटे में कीप ईटिंग समथिंग सो दैट योर ग्लूकोज इज रिफ्यूलिंग योर ब्रेन. ओके, एंड एट द सेम टाइम स्टे अवे फ्रॉम जंक फूड. उसी के साथ साथ एट द सेम टाइम स्टे हाइड्रेटेड. Keep drinking a lot of water and don't over consume on coffee as well as energy drinks. Red Bull लेके उसको नहीं हमें overdose करना है. It's because it is again going to harm our system. Okay? With this हमारे पास एक strategy तैयार हो गई है. Right? हमने सही काम किया तो हम जरूर ace करेंगे. We are going to rule this up. And don't worry about the result. See, there are some things which are not in your hand. 2 shift में हो रहा है, आप कुछ नहीं कर सकते. आपका स्कोर बेटर आएगा कि नहीं आपको नहीं पता. एनबीई ने 2 शिफ्ट क्यों रखी आपको नहीं पता. देयर आर सम थिंग्स व्हिच यू कैन नॉट रूल आउट और व्हिच यू कैन नॉट हैव अ कंट्रोल ओवर देम. सो स्टॉप थिंकिंग अबाउट देम, स्टॉप बॉदरिंग अबाउट देम, स्टॉप थिंकिंग अबाउट व्हाट इज इन योर कंट्रोल, व्हाट यू कैन डू विद इट. ओके, नाउ फॉर योर ईज ऑफ प्रिपरेशन टू फाइंड द राइट एग्जाम स्ट्रेटजी एंड ऑल्सो फॉर अ मेंटल प्रिपरेशन फॉर नीट पीजी, आवर expert mentors have curated a Sankalp Telegram group and you can join that. The description is given below in the link. अब लास्ट चीज ये आती है कि बहुत टाइम पे हमें ये लगने लगता है कि 2 शिफ्ट में एग्जाम हो रहा है, राइट? एंड maybe one exam is tougher, one is easier. So students kind of, start having a bias that, this might affect our rank. Now, this is what we call as a normalization of scores. And about this normalization of score, we have got our expert mentor, Dr. Ranjit, who has done a beautiful video where he describes about how this normalization of score happens in NEET PG. And you can watch that over on the link given in the description below. So always remember, we are working for one goal and we have to take one step at a time. So cut the outside noise and start working on your dream today. And I wish you all the very best. And I know that you guys all will ace it one day.